हाय ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आई कैन से स्कैट यूट्यूब चैनल। एंड ये जो वीडियो सीरीज चल रही है स्पेशली इंटरव्यूज को लेकर, आई बिलीव दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू हैव द इंटरव्यूज इन द कमिंग डेज. यू पीपल ought not miss any single video. एंड स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है. आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स की उसको भी ज़रूर वॉच करें. एंड इसी स्क्रीन पर यू विल गेट द लिंक ऑल्सो. So in each and every short video we are discussing a lot of things. जैसे first video में specially I focused upon what things the interviewer panel actually looks for in a student. आखिर किसी भी कॉलेज में स्टूडेंट जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो वो कॉलेज हमारे अंदर देखता क्या है, तो मेजरली वी हैव फोकस्ड ऑन दैट. In today's video we are going to discuss about the most important domain areas, the most important areas from where the questions generally come. आज के इस वीडियो को स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे ना तो यू विल एक्चुअली कम टू नो कि इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें कौन से फेस करने होते हैं. एंड बिलीव मी, इन दिस वीडियो ऑफ 10 minutes यू आर गोइंग टू गेट अक्रॉस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन across all the possible areas from where the questions may come. And believe me, one by one whatever questions I'll be discussing, if you think about the answers properly, and anyway answers के बारे में भी आने वाले videos में I'll keep discussing about a lot of things. So please ensure that you subscribe the channel, like this video and keep sharing this video with all your friends as well. सबका भला भी करते चलो, okay? So students, coming on, सबसे important, the various genres of asking questions. Genres का मतलब क्या होता है? कैटेगरीज. तो व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज? स्टूडेंट्स, किसी भी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए या फिर ऐसे किसी भी स्टूडेंट के लिए जिसके पास कोई वर्क एक्स नहीं होता, देयर आर 5 मेजर एरियाज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस में कम. एंड व्हाट आर दीज 5 मेजर एरियाज? आई विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन. आई विल कीप गिविंग अ लॉट ऑफ सैम्पल क्वेश्चंस ऑल्सो. सबसे पहला स्टूडेंट्स HR क्वेश्चन जिन्हें अपन कहते हैं, दैट इज डिस्कवरिंग यू. द वेरी फर्स्ट एरिया, इट्स ऑल अबाउट यू. The interviewer actually wants to understand what kind of person you are. The interviewer actually wants to understand what are your hobbies, what are your beliefs, what are your achievements, what are your career goals, what are your strength areas, what are your weaknesses, who is your role model, okay, and what are your aspirations. And whenever you have some leisure time, what do you generally do, what kind of newspapers you read, and what kind of web series do you watch, what kind of movies do you love, every possible thing. तो इसमें स्टूडेंट्स आप देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. और ये जो पहला क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन, इन 90-95% ऑफ द केसेस द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू स्टार्ट्स विद दिस वन क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. एंड दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन. यू टॉक अबाउट योर USPs. यू कैन हाईलाइट दोज एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. दिस इंट्रोडक्शन, यू पीपल हैव टू प्लान इट इन अ प्रॉपर वे. And this introduction, the answer to this question, that has to showcase yourself properly. So that is something, students, on which you have to keep working. Anyway, how an introduction has to be given, and students, they keep asking question to me, sir, whether we should start with the name or not. क्या हमें स्कूल का नाम लेना है कि नहीं लेना है? सर, मुझे हॉबीज़ बतानी है कि नहीं बतानी है? क्या मैं वीकनेस भी इंट्रोडक्शन में बता दूँ या नहीं बताऊँ? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इंट्रोडक्शन को लेकर. एंड फॉर दैट स्टूडेंट्स, जस्ट वेट फॉर द अनदर शॉर्ट वीडियो. And believe me, उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को जैसे आप देखोगे, you will actually come to know a lot of things about yourself जो अभी तक तुम्हें भी नहीं पता था कि which are very important for an interview. There are so many things. Talk about everything which is there in you. Okay, just you have to prioritize. You people have to decide कि मेरे अंदर मुझे सबसे पहले क्या बताना है, सेकेंड क्या बताना है, थर्ड क्या बताना है. Okay, you people have to see, like, अगर आपको एंकरिंग करने का शौक है, बताओ उस बारे में, अंडरस्टैंड. केवल स्टूडियस बच्चा कोई कॉलेज नहीं चाहता है. हर कॉलेज चाहता है कि एक वर्सेटाइल, मल्टी फैसेटेड स्टूडेंट होना चाहिए. सो व्हाट आई मीन टू से इज, इफ यू रियली वांट टू हैव 1-to-1 मेंटरिंग, तब तो स्टूडेंट्स डू जॉइन द पर्सनल क्लासेस जो मैं लेता हूँ. ओके, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है. एंड एक बार इन क्लासेस को कर लो, नॉट अबाउट 10 इंटरव्यू जो 10-15 दिन बाद होने वाला है, बट फ्यूचर में जितने इंटरव्यूज हैं, कितने भी साल के बाद, बट दीज क्लासेस आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. So students, the very first type of questions, HR questions. Tell me something about yourself. Okay, questions like what are your weaknesses, जो मैं अभी just बता रहा था. Questions like what actually you want to become in life, where you see yourself 10 years, 5 years down the lane. Okay, questions like if given a chance, what kind of animal you would like to be and why. Even such questions are possible.
ओके, सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, अपने आप को डिस्कवर करो सबसे पहले। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अगर आपने दे दिया स्टूडेंट्स, ओके, आपने क्लैरिटी के साथ अपने आप को सेल कर दिया, दिस इज व्हाट द इंटरव्यूअर इज इवेंचुअली लुकिंग फॉर। एंड दीज आर द क्वेश्चंस वेयर एक्चुअली यू कैन एग्जिबिट व्हाट आर योर स्किल्स, these are the questions where you can exhibit, okay, yourself properly. And believe me, every candidate, you people have to behave like a salesman, and you yourself are the product. And during that interview you have to present yourself as a brand, so know yourself properly. This is what you people have to do. अपने आप को डिस्कवर करो। ओके, ये सब क्वेश्चंस के लिस्ट आई कीप डिस्कसिंग इन द वीडियोस, पर इन सब क्वेश्चंस के बारे में कीप थिंकिंग। तो सबसे पहले HR क्वेश्चंस अपने बारे में, ओके, आप कैसा दोस्त बनाना चाहते हो, आप कैसी कंपनी चाहते हो, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। सेकंड स्टूडेंट्स, द सेकंड कैटेगरी, academic questions. What have you done in 12th? Which were the subjects you were studying? Which was the favorite subject? And the moment you say that you are a student of commerce, definitely accountancy, BST, economics, questions pertaining to them can be there. Questions based on national income, questions based on law of demand, law of supply, questions based on the simple principles of accountancy, questions based on BST, okay, questions like strategy, planning, etc. What is management, what is business, okay, what do you understand by marketing mix? ऐसे बहुत सारे questions possible हैं, academic questions. And the moment you say my favorite subject is maths, quant, questions based on maths can also be there. कई बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड? जनरली स्टूडेंट से 64, बेटा 64 तो डायरेक्टली है, बट 2x2, 3x3 ये भी तो सब स्क्वायर्स बनते हैं। आपके ऐसे कई सारे मैथ्स के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो एकेडमिक क्वेश्चंस, ओके, सो इफ यू बिलोंग टू कॉमर्स, साइंस, व्हाटएवर, ओके, इफ यू हैव द सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर्स, तो पॉसिबली क्वेश्चंस कैन बी बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो। तो इसीलिए स्टूडेंट्स उन्हें भी समझना है और ढंग से करना है, अंडरस्टैंड। तो academic questions, the second category. The third category, domain specific. Ultimately, why you want to go for BBA, why MBA, why management as a career, how much you understand about BBA, do you know what is the curriculum you are going to study here, how much you know about the college basically, why you want to join this college, ऐसे बहुत सारे questions. Okay, तो these are domain specific questions. हम जिसमें career बनाने जा रहे हैं उसके बारे में questions. So if you are going to make a career in the field of management, questions like, okay, can you name 5 latest startups with the names of the founders? Can you name 5 entrepreneurs of India with the names of the companies? Can you tell the names of few of the companies with their taglines? Any question can be there, understand? Or possibly the name of any company is given, and if the question comes, it belongs to which country? ऐसे questions आने के chances हैं। तो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस, तो जिस एरिया में हम करियर बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। अगर कोई BCA करना जा रहा है तो डेफिनेटली क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू कंप्यूटर्स कैन आल्सो बी देयर। ओके, कोई स्टूडेंट्स अगर BA इंग्लिश में जाता है तो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस कैन बी देयर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वाई, तुम करना क्यों चाहते हो, एंड वाई यू वांट टू जॉइन आवर कॉलेज, ओके, एंड एट द सेम टाइम वाई शुड वी टेक यू। दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस। ओके, current affairs and GK. So another important area, that is current affairs and GK, and this is the Pandora's box. Okay, this is the Pandora's box where so many questions can be there. There are majorly 2 types of questions asked here. One is the objective questions. Okay, like who was the first president of India? Like who was the founder of Infosys, or who is the current CEO of Infosys? Such questions are objective in nature. Who is the president of China? Okay, what is the GDP growth rate India had in 2022 and 23? And there can be some questions which are subjective in nature. Okay, where possibly question can be based on how much do you know and what's your opinion about a particular thing. Like few days back we had a rail accident in Odisha. Hundreds of people died. So possibly the direct question can be like, can you name the trains which were involved in that? Okay, can you name who is the railway minister? Or the questions like, what do you think the government should do now? Should the railway minister resign or not? What is your opinion on this? The opposition parties, they are asking for the resignation of the railway minister. So what is your opinion? Should he resign?
Such questions can be there. Okay, what do you think in the coming days, how the GDP of India is going to perform? What do you think, what do you think, like, despite the recession in the world, why Indian economy is performing well? Okay, do you know what are the major things India is exporting? What are the major things India is importing? Okay, such questions can be there. So try to understand one thing, current affairs, anything which is going on these days. Just yesterday there was a collapse of a bridge in one of the states. Can you tell me the name of that? ऐसे questions. इसलिए न्यूज़पेपर्स के टच में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैटिक जीके भी हो सकता है, करंट अफेयर्स भी हो सकता है. एंड मेजरली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उससे पर्टेनिंग, उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके. कोई मेजर स्पोर्ट्स इवेंट अगर होता है, क्वेश्चंस कैन बी बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो. Okay, the moment you say that your hobby is playing football, possibly the discussion can go on FIFA World Cup, the discussion can go about the various football clubs. Manchester United, it was on sale. So what was the valuation of the club? How do we generally do the valuation? ऐसे कई सारे questions. I'm just giving you some idea. इस वीडियो में students I'll not be giving the answers. I'll just be giving the questions, understand. So current affairs, बड़ा interesting area. आंसर पता हो बता दो, नहीं पता हो थोड़ा सा आइडिया हो, परमिशन के साथ गेस करो. बिल्कुल नहीं पता हो, स्ट्रेट अवे इट्स बेटर टू से सॉरी सर, ठीक, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस टॉपिक. Okay, it's always better to skip the question then without embarrassment. And the last category is situation based questions. Now in this situation, in the wake of the recent rail accident, if you were the railway minister, what would you have done? Would you have resigned or not? Substantiate. Such questions. If you were the CEO of a company and the company is facing stiff competition, okay, in such a situation, how will you proceed? This is the way. Situational questions. Got the idea? If you were the interviewer and two candidates are there, one with excellent academic skills, okay, and one with excellent communication skills, confidence, clarity, enthusiasm, whereas the other one, though academically he is very good, but still a bit of confidence is lacking, whom will you choose? Why? This is the kind of situation based questions. Okay, there are many such situations possible. If you were the finance minister of India, what steps you would have taken, okay, to ensure that India reaches $5 trillion economy by 2025-26, and can we genuinely do this? Such questions. Got it, students? तो ये situation based questions होते हैं. Okay, आपसे और पूछा जा सकता है, can you just describe any such a challenging situation which you have faced in your life? How did you overcome that and what the learnings were? The most challenging situation, again you have to explain that. तो इसीलिए स्टूडेंट्स इन सब क्वेश्चंस के बारे में पहले से प्रिपेयर करके जाओ. मैंने इतने सारे क्वेश्चंस बता दिए इन स्पैन ऑफ 10 minutes. Believe me students, this video is going to be wonderful. आप इन सारे क्वेश्चंस पर and stick to this channel. When I say you people should subscribe, should like, okay, understand we are not gaining anything as of now. What is more important is you'll be gaining a lot of things. हम तो स्टूडेंट्स एक बहुत लंबे गोल के साथ चल रहे हैं. हमें पता है आने वाले दिनों में this channel is going to rock and thousands and lakhs of students are going to get with us. Okay, because we know that the kind of value addition which we people are doing here. 20 years of experience that I'm sharing with you. Students, keep working, give your best. Interview is all about knowing yourself. Interview is all about developing content, developing very good presence of mind, and then do take some mocks so that you can practice giving the answers. Is it okay? So finally students, thank you very much for watching this video till now, and goodbye for now. See you very soon in the next video. Goodbye. Thanks.